tensions boil over and the area around Jerusalem's Aqsa Mosque descends into chaos. Palestinian protesters take aim at Israeli police, hurling stones, bottles and fireworks. Officers in riot gear respond with a show of force. They're throwing bombs at Muslim worshippers to empty Aqsa Mosque. Dozens of protesters sustain injuries, many to the face and eyes, from rubber-coated bullets and shrapnel from stun grenades. With nearby emergency rooms filling up fast, the Palestinian Red Crescent sets up a field hospital to treat the wounded. The violence at one of Islam's most revered sites erupted after the final Friday prayer of Ramadan. Throughout the Muslim holy month, anger has been building over a bid by Jewish settlers to evict Palestinians from their homes in East Jerusalem. The court case was the focus of Friday's sermon at Aqsa Mosque, and many worshippers stayed on to protest. They were backed by international calls for calm and restraint. The United Nations warned Israel would be violating international law if it approved the evictions. Evictions on Monday. Both sides are bracing for more violence, because on that same day, Israel will be marking Jerusalem Day, an annual celebration of its annexation of East Jerusalem in 1966. Through water bottles, Israeli security forces used stun grenades, foul-smelling, chemically laced water jets, and close-up physical force. This man was beaten on the ground in front of us and then ushered away into the night with no attempt to detain him. It wasn't an isolated incident. So the period just before and around prayers was relatively calm here at Damascus Gate, but potentially violent night could ensue. In the following hours, that potential was fulfilled. The anger here isn't just about the scenes from Al-Aqsa on Friday when stun grenades were used inside the mosque itself. It's been building over threats to forcibly evict Palestinian families from their homes in the East Jerusalem neighborhood of Sheikh Jarrah. People's solidarity gave us the power to continue with our peaceful resistance. All that we are asking is peaceful solidarity against our eviction. We ask any organization or governments to stand with us and help prevent the forceful evictions in Sheikh Jarrah. Hard off, and it's been exacerbated by interventions from the Israeli far right. We don't have not light at the end of the tunnel, but we don't have a tunnel because there is no peace process. East Jerusalem is occupied. It's not Israeli sovereignty in Jerusalem. It hasn't been recognized by the international community. So we are sitting on a volcano. There are concerns of a further deterioration. On Monday, thousands of Jewish Israelis are set to march through the old city's Muslim quarter to mark the Israeli seizure of East Jerusalem in 1967, on the same day as a Supreme Court hearing on the Sheikh Jarrah evictions. Dangerous days ahead for a flashpoint city that can be both a focal point and a fuse for conflict within and far beyond its streets. Harry Fawcett, Al Jazeera, occupied East Jerusalem. इजरायली पुलिस ने नमाज पढ़ते लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ स्टन ग्रेनेड और वाटर कैनन दागे थे। दोस्तों, इजरायल द्वारा इस बर्बरतापूर्ण घटना के बाद अब तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल पर जबरदस्त हमला बोला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर बीबीसी की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, इस घटना पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भी ऐसे हमले करता रहेगा। वहीं फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने इस बात की घोर निंदा करते हुए इस हमले को भयंकर गुनाह बताया है और इजरायल को इसकी सजा दिलवाने के लिए दुनिया भर के देशों से मदद मांगी है, जिसके बाद दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों के एक होने की खबर है, क्योंकि इस घटना के बाद सभी मुस्लिम देशों में इजरायल के प्रति भयंकर गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और संयुक्त राष्ट्र ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल के रवैये की घोर निंदा की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि हम अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल के जघन्य हमले की निंदा करते हैं, जो कि दुर्भाग्य से हर रमजान के दौरान किए जाते हैं।
तुर्की अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहेगा और हो सकता है इजराइल को इसका जवाब जल्द मिल जाएगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस हिंसा की निंदा करते हुए लिखा है, अल अक्सा मस्जिद जिस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वहां निर्दोष लोगों पर रमजान के महीने में हमले की मैं निंदा करता हूं। इस तरह की क्रूरता मानवता और मानवाधिकार कानून की भावना के खिलाफ है। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल को इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अल अरबिया चैनल पर प्रसारित एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब इजराइल द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने की योजना को खारिज करता है। अरब देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इस मामले में दखल दे ताकि इस इलाके में किसी को नहीं हटाया जाए। वहीं स्थिति को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को कहा है कि किसी को भी वहां से हटाने से बचना चाहिए और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि किस बात को लेकर विवाद हुआ था। अल अक्सा मस्जिद परिसर जो कि पुराने यरूशलेम शहर में है, उसे मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन इस जगह पर यहूदियों का पवित्र माउंट मंदिर भी है। यहाँ पहले भी हिंसा होती रही है। शुक्रवार रात को रमजान के आखिरी जुम्मे के मौके पर हजारों लोग यहाँ जमा हुए थे, जिसके बाद हिंसा शुरू हुई। शुक्रवार का दिन पिछले कई सालों में हिंसा के मामले में सबसे खराब दिनों में से एक रहा। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता है। वहीं फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आजाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ा है। आरोप है कि जमीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों अब ये देखना होगा कि इजराइल पर मुस्लिम देश क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि अब इजराइल ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, जिसे दुनिया भर में एक बढ़ते तनाव के रूप में देखा जाने लगा है। अच्छा